टाइम क्या था कि 92.5% e-commerce order was on the cash on delivery. Nobody was having trust on e-commerce players. He spent over a decade solving the invincible layer of logistics, the part we only notice when it fails. You're buying the trust of the people. You're not selling anything. Nothing against Indian or Asians, but Indians are most demanding. I need it right now. I need everything and I don't want to pay. Entrepreneurship is always like driving a bike on the mountain. The height you are going, you will have to put much more pressure on the pedals. Welcome back to another episode of The Living Pod by Saurabh, which is a series to get best of the educators, best of the stakeholders and best of the founders. And today we have a founder, Gautam Kumar, built his company there anyway. As a co-founder and a CEO of FarEye, he spent over a decade solving the invincible layer of logistics, the part we only notice when it fails. Today, FarEye supports delivery operations for major enterprises across 30 countries, including the giants like DHL, Walmart, Domino's and Amway. They have become the first choice for last mile. Welcome to the Living Pod and let's get started. How are you, sir? Always, Saurabh, nice to meet you and great to know about you. And thanks a lot for this opportunity where this is the first, platform I have seen after a long time where I have not seen any of the questions. So I know it would be, and you have not designed as well. Just go with the flow. You are sitting with a blank paper to take the note down, right? So, and lastly, it would be very candid, natural thing and relatable to a lot of our audience over here. And I'll try to definitely fetch all the information if anything would be related to the life related to earlier years and definitely, as you correctly defined, FarEye is working in 32 countries. We are one of the global leader and we are providing a consumer experience and visibility in the domain of the supply chain by providing a delivery management software. Please tell me, and also, I have a very pseudo understanding of FarEye, right? And I guess you have changed your name also of lately, right? And you're doing brilliantly well, right? So, what exactly is FarEye, and what was the name before FarEye, and guess how does it start? Because for me, when I got to know FarEye, I thought it's a okay. I've been told that the mile end mile delivery software management. Is it something what delivery has been doing? Is it something what DHL been doing? So you are into logistic, right, and delivery, right? But exactly what you do, So also I zoom out. So my audience is, it can be a 13, 14-year young guy who's looking for a next big $1 billion idea, or a parent who's thinking about, should I get my kids into logistic sectors, and what will be the way to get into logistic, So what exactly FarEye do? And over to you. You want to introduce yourself. You want to start with your any story because you're a great storyteller, right? So anything, everything. Over to you, sir. So I think there are a 3 segment of the conversation or the questions that you're asking, right? So first segment about how we started till FarEye, right? Then what exactly FarEye is doing, and what is the real mean of logistic for larger audience, right? Right, absolutely. So I'll start with the journey, and it happens largely when you are growing in a very tier 2, tier 3 cities, right? So there is a small place known as Samastipur district के अंदर में पड़ता है सापुर पटोरी, where you are going to not a modern school, a regular government schools, and then getting the feel of the engineering, and then thinking about to become engineer, then going to the engineering coaching institutes. So nowadays Super 30 Anand Kumar is very popular, great guy, great teacher, got chance to become part of the not Super 30 regular batch, right? So what is the difference between Super 30 and regular batch? So he was having some a special kid who is coming from very poor background, right? So almost same time he has just started those batch. We were into regular batch, jahan pe 5-6 batches in a daytime he was taking, and from those earnings
sponsoring like now movie is out and Yeah, he's yeah. quite popular. Right. He used to be popular almost like. तो वहाँ पे like when like participated in those coaching institutes, then realize कि बस इंजीनियरिंग की दुनिया इज़ लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी लंबी है. एंड फिर आप वहाँ से पटना आते हो. पटना के बाद फिर So how far is Patna from Samastipur? इट्स and लाइक 70-80 किलोमीटर्स, Okay. राइट. मतलब मेरे लिए जैसे मेरे से दिल्ली हो गया. I'm तो- from मेरठ. आपका वही. Okay. राइट. और उस बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हो. इट्स नॉट इजी, राइट. अगर मान लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना अभी भी या पहले भी मतलब आई विल से कि देयर लॉट ऑफ गुड रोड्स, क्वालिटी रोड्स. वहाँ से आपको प्लान करना होता था कि यार आप जाओगे, फिर ट्रेन पे जाओगे, फिर ये करोगे. लाइक सो यू डोंट हैव एक्सेस एंड लग्जरी की यार एक डेडिकेटेड कार में, राइट. सो देयर लॉट ऑफ स्टफ्स एंड देन यू आर फाइटिंग हार्ड. And then someday deciding like during the college days कि यार, और कॉलेज में भी क्या होता है कि यार एक आईआईटी का चाम होता है. इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार तो या तो लोग आईआईटीएन जाते हैं, IAS बनते हैं. आईएएस बनते हैं, नहीं तो फिर मीडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, लॉयर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे. इज इट द पावर ऑफ वहाँ पावर डायनेमिक्स है. बिकॉज आप देखो, एंड सॉरी मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट IAS मीडिया दिस आर मोस्टली पैसा तो है ही, but it's more influence. So like did you feel it, and do you also believe that, I mean, I believe Bihar is one of the most interact people, and they are very aware and very like politically they are very engaged. What is driving Biharis and Bihar and Patna? यार उसके 2 रीज़न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक तो लाइक when I was growing up तो I learned, but when I started business तो second part like again went back to do the research and studied a lot of history about. तो I'll start with the second one because वो historical रहा है, right. So अगर आप देखोगे तो like entire राजगीर, नालंदा, विक्रमशिला, right, चाणक्यास and अशोकास, right. So जो DNA है ना, definitely वो DNA top education वाली है. Still like universities like Vikramshila, universities like Nalandas, right. If you'll see like per square kilometer density is humongous because it was like the beginning of the density developed across the Ganga and Yamunas in North India, right. So Bihar definitely became like जैसे वैशाली, दरभंगा, so these are like places definitely वो जो डीएनए है ना पावर वाला है, राइट. कि वो एंड वो बाय डिफॉल्ट होता है. बिकॉज और लोग हैं तो आपको स्टैंडर्ड होना है, और स्टैंडर्ड होने का एडुकेशन, मीडिया, सब कुछ. और आप उसमें एक टाइम में अहेड थे मार्केट में, मतलब एंड ये सब हिस्ट्री में है, राइट. एग्री कि तो अगर आप देखोगे तो एंड दैट वाज वन ऑफ द डिफरेंशिएटर इन इंडिया. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंडिया में बेस्ट था या बेस्ट है या कुछ है, बट these were like some extra features जो बिहार में था, राइट. तो वो डीएनए तो हो जाता है. एंड दूसरा जब स्टडी कर रहा था, जो देखा जब ग्रोथ फेज में, अगर आप देखोगे तो टैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स कि अगर अल्टरनेटिव्स देखोगे लाइक कि इंडस्ट्रीज का, इकोसिस्टम, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज का, दैट ऑप्शंस आर आल्सो नॉट अवेलेबल, राइट. सो लार्जली एंड देन लाइक वन डे डिसाइडिंग कि यार बिजनेस करना है. But Right. कैसे एकदम से, especially when you are not coming from a business background, Right. and why business for you, and especially engineering generally is been facilitator of a more comfortable job or a a service career as a whole. Correct. So like somehow the thesis like I learned from like I will say father. कि when he was into administrative job, no, so he was always suggesting कि see like and when we were much curious during our growth phase, तो पूछते थे कि लाइक कोई भी डिसीजन लो ना, उसका देखो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होएगा, डोंट गो इनटू लाइक अ टैक्टिकल आउटकम्स एंड ऑल, राइट. देन लाइक व्हेन केम टू द एज ऑफ द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, तो इट वाज कि बॉस लाइफ कैसे जीना है. One side is this, other side is this, right. So then decided ki boss like it should be impactful, right. And with that courage ki yaar
you never know what would be the future, and that direction जहाँ पे कि like आप business field में जाते हो जहाँ पे तो और भी पता नहीं है कि next day क्या होएगा, right? And again, like if going back in those times, like 7, 8, 9, when like you are staying in the hostels, you have limited money, managing something, then decided कि बस like एक entrepreneur जो होता है ना, और like it doesn't mean कि कोई business खड़ा करता है, right? It means कि like how to create the culture of the entrepreneurship की values कितना create करते हो, right? So then decided कि यार like and very interesting, आर्मी में जैसे होता है like during any wars, तो लोग क्या करते हैं कि you might have seen and notice करना like through the movies and all and interaction I have learned कि जंग में ना लोग या तो जीतते हैं, विन करते हैं, या मर जाते हैं, हारते नहीं है, वो बीच में हारते नहीं है ना। और हर एक बार जब भी कोई जंग होता है ना, तो उस टाइम देखोगे तो कोई पुराने टॉप टीम को नहीं लगाया जाता है जो जंग जीती होगी या हारी होगी उसको, या फ्रेश माइंड लोग को जो कि जीतने के काबिल माने जाते हैं और जीतते हैं, बिकॉज सी देयर इज नो राइट सिल्वर बुलेट in this life, right? So and creating those DNA is very different. So even like in the journey we created, if you'll see like a FarEye culture is full of entrepreneurs, like micromanagement की जरूरत नहीं है, टीम विल ओन, अगर कोई प्रोफेशनल कुछ आते भी हैं तो वो अनलर्न करके आते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द रीज़न हमने जो टीम बनाई, कोर टीम, राइट, वो सारे के डीएनए वैसी है. नाउ गोइंग बैक, राइट, देन वी थॉट कि लाइक ड्यूरिंग college days, like when met with two other my co-founders like Kushal and Gaurav, right? So we decided कि यार like low cost में what we can start, and you know like coming from the family almost like middle class family, तो था कि यार हम एक training institutions करते हैं, वहाँ पे like we'll sell our ज्ञान, knowledge and we'll earn money, right? So we started like selling our learnings of Gaurav was like a software expert, myself Kushal were hardware experts, both from electronics, Gaurav was from computer science. Then we thought कि like combining hardware and software there would be some mix of automation related to robotics, so we registered like a robotic wares as a company, you know, one cool day, very logical approach, right, without putting too much brain. And we decided कि boss like we don't know what is the bigger dent we are creating in this universe, but largely like let's start this business. And definitely that was looking low hanging, not having idea about कि investment कैसे होती है, fundraise from the college days, 8-9 में सारे graduate हो रहे थे, but like 8-9 types में तीनों combine करके we created like a good amount of money to survive for another 2-3 years, right? And then we thought कि like the scale is a big problem for us and we are not coming from that DNA, right? We tried to loan some levers over there, but that was not sufficient. So it was always, let's create some product. So 9 to 13, like we ventured into IoT product like India में GPS tracking systems, right? So FarEye करके then we named like along 12-13 कि will provide some visibility. Then realize like hardware is not cup of tea, where like you will have to manage your all the inventories, then supplies, manufacturing, replacements, and it needs like a lot of capital, right? And you know, raising those capitals were not easy from city like Bhubaneswar. And when you know, when was you moved to Delhi or inside? You always been to Bhubaneswar in the initial days. I'm talking about no 9 to 13, like almost 4 years. College 9 तक, right? So 13 तक में ये था कि यार ये तो स्केल करना मुश्किल होगा. Then you know like we you know like translated the entire learning to the product. उस टाइम एंड्रॉयड भी आ रहा था मार्केट में. So we thought कि like one side जो हम हार्डवेयर बनाते थे, let's create the like all those SDKs and APKs to install in the form of software as a mobile application, and let's deal with the economy that is growing. उस बीच में 2011 में
became awardee of MIT by MIT as a social innovator of India. बहुत सारे data points Tell me मिलने more about लगे. MIT social program. So largely, like during the And was that your like kind of first taste of like okay I belong and यार मैं भी किसी कंपनी हूँ and ठीक है IIT नहीं है तो क्या हुआ but अगर MIT वैलिडेट कर रहा है और कुछ तो मैं अच्छा करूँ. correct. Was that like a confidence? Uh, yes. No, it's a great feeling, like just trying to memorize, like going back, 14 years is not easy, right? So, definitely like validating, I won't say first time, because, when you were a student and winning into the competition on the Asia level, right? And competing with IIT folks and different multi-country folks. So we have done in college days. So that was not a problem, like validating our ideas, proof of concept and all, when like your projects are getting sponsored by, MNCs and all during when you are in college, right? So that has been done. But yes, like as a special feel when you are getting calls from, one of the popular magazine of India, Tech magazine, and then they're asking you like, you are under the review, we wanted to set up some calls, and then and it was like a very basic. So one side we were creating like a GPS tracking system, other side like we were working on multiple projects. So second project was like IoT based, like when we noticed like there are a lot of families are getting like losing their life because of the LPG cylinder leakage, right? Like what we have done those days, created a hardware that will sense like a gas leakage, and then it will send the SMS. Those days there was no WhatsApp, there was no emails and all, right? So created all those modules, demonstrated, somehow it got picked into the powerful media, right? So you were solving for the middleman or a common Middleman, man. always, Yeah. always. So impact, high impact. Yeah, like मैं फारेज भी बनाया ना, तो बनाने का रीजन था कि यार लाइक हर एक बार ना वो ट्रक ड्राइवर ही गाली क्यों सुनता है, राइट? It was more than the business, like how you can create the impact on the mass, on the society, right? FarEye पे भी है, like so to your point, yes, that was like definitely one recognition, validation. But interesting part when we realize कि innovation is fine, validation is fine, the feeling of the celebrity is also fine, but does it make sense for the business? Then we dropped. Right? So that was like not very easy move. It was like a very powerful move ki you will have to keep investing into those product where like you are creating impact but you are getting paid off. Right? प्रोजेक्ट वाइज हो गया वो. आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने किसी के लिए प्रोजेक्ट कर लिया. Correct. तो you were more like a उस समय you were like a service as a software or more like launching 2-3 product and validating from the market, POCs, right? So like on the scale which and will you get done this for like good 4 years, 5 years. 2009 से लेकर मतलब when were you launched FarEye? So like we launched FarEye in the year of 2013. हाँ, तो 4 साल आपने 4 साल like हमने figure out किया बीच में, like we were giving the training 9 to 11 types, 11 12 में started experimenting that this is not looking like the scale business. It was the same lab, where like we were making GPS hardware, we were doing some changes into the hardware coming from the hardware but background. you guys were builders, and your combination all three was, are like a core tech founders even till today, like so. And how did you decide you three need to come back, because ये three founder dynamics भी बहुत interesting dynamics है. Correct. So I have like me and Mayank 2 founders, right? So या तो हाँ होता है या ना होता है. हाँ. 3 founders में ना there is always 2:1. 1:2. So Correct, how was for you? So like वहाँ पे काफ़ी interesting equation था, and largely Gaurav is coming from एक common चीज़ था कि all 3 guys are like a very good guys who can explain product, explain innovation. That is like a by default in 3 of us, all right? So because all 3 were like a very passionate about कि क्या करते थे, right? And you studied together. हॉस्टल में साथ में रहते थे, राइट? इंटरेस्टिंग पार्ट लाइक कुछ के स्किल्स जैसे लाइक द वे गौरव इज एक्सपर्ट इनटू टेक, लाइक सॉफ्टवेयर, राइट? सो
So he can do any magic over there, right? And when like spoken with Kushal, though he was much more passionate about packaging the product, telling the stories, and taking care of the branding, marketing, and I was like much more developing the business relationship, taking So care of you're the a hardware. businessman, you're a business guy. I mean, of course, everything else, but this is your core. So Licensing, relationship, make it meeting happen. people, make it happen, Make it right? happen. Getting So getting that last sign done. हाँ कि मतलब सो तीनों का ना बड़ा यूनिक स्किल है लाइक आई ऑलवेज से लाइक वी हैव ए स्पेशल blessings राइट सो फॉर लास्ट 16 years वी आर वर्किंग टुगेदर इवन वी फेल्ड वी पास विल सेलिब्रेट टुगेदर आज भी वही है मतलब ऐसे कोई यार इसकी वजह से नहीं हो रहा यार, हम दोनों हो जाए या नहीं करने इनके साथ काम आया तो यार देखो अच्छे आउटकम के लिए तो बहुत डिबेट होते हैं हर एक बार होते हैं और उसको लाइक वी आर टेकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर राइट but that is the outcome of the trust that you are building on each other, right? And that comes in the journey. It's the outcome of any relationship, right? And like when all three founders have seen the downwards of the sinusoidal wave, well, like what was that? you were not जब हम interesting story है like for a few months when we were into the hardware business, right? we were knowing like we have like lot of money जो कि वेंडर के पास पड़े हुए कस्टमर्स के पास पड़े हुए बट कैश फ्लो क्रंच था इवन वी वर नॉट गेटिंग मनी टू रोज का खाना नहीं मिलता था राइट तो एक जो हम लोग का पुराना बंदा था जो फिनांस वाला बंदा ये सब राइट तो इवन लाइक somehow he was managing मेस का खाना फॉर फ्यू क्वार्टर्स राइट तो वो हार्डशिप देखी है ये कॉलेज टाइम पे बात है नो कॉलेज की जिस बात कॉलेज के बाद मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 10-11 टाइम्स राइट कि लाइक द टफेस्ट बट यू गाइस डोंट कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली मतलब वैसा नहीं था कि लाइक बट यू आर नॉट आस्किंग मनी not asking money because you are like- doing your business करेक्ट बिकॉज सी लाइक ऑल थ्री आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रेशर होता है जॉब करो हाँ तो लाइक कि जॉब तो करनी है। जॉब तो नहीं किया तो फिर आप डिमांड ही कर सकते हो कि यार पैसा चाहिए तो अब वो था कि मतलब अब अरेंज मैरिज तो करनी नहीं लव मैरिज करनी है अब लव मैरिज करनी है तो नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा खुद से right? करना है खुद से करना है तो ऐसा नहीं भी मांगा और नहीं मिला हो राइट बट ऑफ कोर्स लाइक क्वांटम ऑफ मनी वाज नॉट कि यार चल 2-4 करोड़ ले ले और तू कर ले कुछ भी राइट सो बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली की डेफिनेटली वो ये नहीं था बट वी वर नॉट आस्किंग बैक कि यार लाइक आई ऑलवेज से दैट लाइक आई डिफाइन माय स्टोरी लाइक सब कुछ था हाँ कुछ कम था हाँ और तो कुछ कम था वही ड्राइव है तो मैं क्या बोलता हूँ जो वो हंगरनेस होता है ना वो पैशन को और इनोवेशन को राइट इफ यू आर नॉट फीलिंग हंग्री इफ यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन राइट सो हमने वो सारे फेजेस देखे हैं राइट टुगेदर तो इससे ना बॉन्डिंग भी काफ़ी बनती है और मेरे को लगता है कि लाइक जो टफेस्ट टाइम होता है ना वो बॉन्डिंग को ज़्यादा बनाता है रादर देन द गुड टाइम्स ऑलवेज so and we have seen that during those phase की but like in 13 we realize कि यार बॉस जो भी करेंगे ना so the biggest investor for us तब तक समझ में आ गया था वो कस्टमर से बड़ा कोई नहीं होता है right reason being कि if you are making your customer happy you are giving values to them you are creating impact then you would be happy your investors would be happy you would be like known as a good employer as well right so we try to learn it's a game never ending game but that is the core values that we kept right so wo FarEye ki history mein like from 2013 when we started and again I'll go to the basics ki agar aap dekhoge na to हमने क्यों सोचा कि हम लास्ट माइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके पीछे भी 2 रीज़न है राइट सो when we were pivoting right so सबसे पहला था कि यार like there is no software for blue collars अगर आप right अब तो फिर भी आ गए अब तो फिर भी आ गए but फिर भी आ गए like I'm talking about 12-13 की बात right and in the mass market in the trusted non-trusted society I'll say like I'll divide world into 2 part right so ये जो ड्राइवर्स होते हैं ना लास्ट माइल वाले और उस टाइम क्या था कि लाइक क्लोज टू स्टिल आई रिमेंबर 92.5%
e-commerce order was on the cash on delivery, right? जहाँ पे like nobody was having trust on e-commerce players. I'm not taking the name of the brands, but तो और आप उस environment में जहाँ पे blue collar drive कर रहा है and they're like a moving bank. Nothing against Indian or Asians, but Indians are most demanding. I need it right now. I need everything and I don't want to pay. Right value जो होता है ना शायद I think that is one of the driver of the developing economy, right? So वो strength भी है. तो उससे क्या होता है, then you are going to figure out the levers कि मैं सब कुछ Boeing और Airbus types बनाऊं, but मेरी cost जो होना चाहिए टैक्सी की cost होनी चाहिए, right? So that push you like to innovate something new, right? So why you need so much server space, why you need so much why you need so many third party, create your own IP. So we created our own IP workflow based mechanism. हम कुछ use नहीं करते थे, like free open source पे बनाना शुरू किया, license buy नहीं करना है, right? So जितना minimum cost होता है वहाँ से like we started investing over there, and then like we signed Blue Dart, I still remember, right? So and then like so what you used to do for Blue Dart? So again, like we started as a company for the technology for the last mile delivery. So we started pitching into the market that like we are like a last mile management system company, SaaS पे बेचते हैं. Reason being कि close to 55% cost जो पूरा logistic economy के था last mile में था. और सबसे बड़ा पेन था कि अगर मान लो कि आपके घर पे कोई आ जाए डिलीवरी के लिए, यू आर नॉट अवेलेबल और देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेशन, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, राइट? एंड every miles is an extra cost, right? Because if somebody is attempting second time, third time, and everything is getting improved dramatically when like we invested in the core values of the partners, and we have seen, boss, like you can tell your customers as well that we are investing too much so you can earn more, right? So, and that was giving visibility to the ecosystem, right? So after that, like then we were doing like a parallel, we got some interest from IA and we raised money in 14-15. We got like a couple of offers from institutional fund in 16. I will tell you the name only where like we received the money, but definitely we had few offers where like then like all three were thinking about one day that, dude, like is this right? Like we are getting so many offers, we'll have to focus on the business, right? So then we selected who would be the right partner, right? So how did you select the right partner? Valuation, what was that mean? On the face valuation लगता है. So but what was yours? So those days, like in 16 जो हमने reject किया ना, वहाँ पे valuation arbitrage फिर भी हमने reject किया. So we were like a product company. So उस time जो Elevation Capital ऐसे partner के नाम से होता था. The guy like who was leading that was Alok Goyal. तो उसकी pedigree थी कि like guys coming from Google product team, coming from Redbus, उससे पहले उस time free charge का CEO था. तो like he's having that pedigree of the product and like कि product को scale कैसे करना है. तो we always seen like a money coming through the value, like a value driven पैसे कैसे आएंगे, right? But investor time उस time तो लगाते थे, अब भी hard to say. नहीं यार, like all your investors been putting lots of time and of course money. So we were lucky, or like in the journey, not only that, even like after that we got like M12, Honeywell, DHL became client, they put check, right? So then like 8 Roads, right? Fundamentum, the fund of Nandan Nilekani. So then like TCV, Dragonio. So TCV is the investor of Netflix, Airbnb, Meta, all the popular names, LinkedIn. They are investor of FarEye as well, right? So rather like I don't know about the other businesses, but from and day one, it's also dependent on the founder how they seek value. Correct. Are you looking for money or are you looking for beyond money? वो true है कि like we were always looking for beyond money. And शायद ये होता है कि more than the pitch, like we were always sharing the
growth problem with the investors. Openly बहुत बोलते थे कि open, बस ये right. तो हम solve कर लिए हैं, बस solve हो जाएगा. उसके beyond का ना, these are the stack where like we need some reference calls, and they were like quite excited, happy, and they have like a good portfolio companies. Sharing knowledge, उनके पास बहुत सारे benchmark data होते हैं. And I believe this is a great learning for everyone, Yes. all the founders and for all of us, and especially me also, that we believe that if we are reaching out to someone and they're only for money, but no, money is a byproduct. If you reach out and you have a heart-to-heart discussion, Correct. and you tell that this is my problem, I'm doing this, but I'm getting stuck here. Yes. There are people who will go beyond their means to connect and help. Even individual level pe. I have seen like now our a lot of investors, right, are like emotionally connected with the business as well, right? You brought them in. So that is the part, and like I always say like any extra communication helps in the relationship. Always. Right. So this is one thing which I relate, and probably I will connect you here, because I always say over communication is better than no communication. And if there's no expectation, relationship go really well. The moment there's high expectation, complication creeps in. Sad, like you are correct. So हमने वो journey में देखा, like we have felt that with all the investors, like they came as a partner, we treated as a true partner, right? Ki beyond money, like, and definitely, see, everyone is looking for the common outcome, common goal, and beyond the board meetings, they are spending a lot of time with us, right? So that was one thing, and that's what, like, in the journey, while like in front of audience, like I'm saying, ki, like we were having a lot of offers, but we were also mindful who would be the right partner in the journey, right? And like, and whatever we have felt in a like 3 meetings, 4 meetings, then we decided, no, like, irrespective of the global fund, big names, we need the partner who is going to represent. It matters a lot for us, because it's like building a great business is a marathon. It's not a sprint, for sure. right? So we need player who can run with us in the marathon. If someone is looking for a sprint, ki yaar mere ko 2 saal mein exit chahiye, 3 saal mein exit chahiye, we are not the company. We are here to create. If you'll see, like, our TAM is the massive, एक तरफ Amazon, eBay of the globe बन रहा है, Flipkart बन रहा है, Walmart बन रहा है. Legacy companies are not having softwares, right? And उनको adopt कराना अपने आप में एक change management is a big time pain. Right. It's a big time pain. It's a big time pain. Right now, like, we work with, like, I can't tell all the names in front of the camera because of the limitation. All the biggest one. All the biggest one. If you can, it's smart enough to understand who's the biggest furniture company, you will understand. If you understand who delivers the happiness, you will understand. Yes. So I can tell, so we are working with global largest furniture brands. We work with one of the largest grocery and retail brands, like a Walmart, I can say, because happily they are putting in on their public forums name that we are working with FarEye. One of the amazing pharmaceutical and consumer brands company, like a Johnson & Johnson, we are working. All the legacy. One of the largest courier company of the universe, DHL, we are working. And they invest also. They are investor also, right? Wow. So how are you wooing them? Apart from, see, I believe products बहुत सारे हो, but it's just not only product, So what is that recipe, if I ask, what is working for you to get all these big names that too coming out of India? Because traditionally, like, SaaS is just 1% of, like, India's SaaS business is 1% of global SaaS business, right? Because probably infrastructure, trust, compliance, what been working for you or been worked for you? So, it's very interesting. अगर आप देखोगे कि Indian SaaS and enterprise में, right, there is very few company जो कि enterprise business में है, like not in SMEs कि हम credit card swipe कर दिए और पर एजेंट बेसिस पे आपको $50, $100 देने हैं, पर यूजर बेसिस पे देने हैं, राइट? सो इन enterprise the biggest pain is like a change management, right? Second biggest problem is like the opportunity cost, right? If I'll tell you, like, the biggest lever for us that has worked is the consumer expectation and consumer demand, right? Because if you'll see in last 15 years,
it has changed big way, right? So even like a B2B users wants everything update on WhatsApp, Viber, different chatbot. Right. I have seen in some of the countries, Southeast Asian countries, तो याद आ right? गया, right. So and like there are like lot of applications where like they wanted reports, even CEOs and all. So and so there was a time when I always say it's no more Google, it's Uber. Uber means like you need like a proactively Instant, updates, yeah. right? Instant, right? So Nice. so and because of the consumer demand, because if you'll see the journey of the e-commerce 10 years before in some of the Western market, like 4 days, 5 days deliveries were like a normal, right? Now sitting in India and Gulf, we are talking about 10 minutes delivery, 15 minutes delivery, and traditionally, how will you change the supply chain, right? And supply chain is not new. Right? Yeah, If you'll see yeah. like मैं बोलता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान जब तक रहेगा supply chain is chain like a रहेगी, yeah. backbone. It's a Right. blood vessels, right, of the existence. But the demand of the consumer is going to change big time, Right. Like 15 years before, even like we all were celebrating when like those days कि अगर 7 दिन में सामान आ जाता था tier 2 wow. cities सामान Minute इसको to two बताते आ थे गया. हाँ मतलब तो आज we do like you are getting in 10 minutes 7 15 minutes, minutes even like 7 minutes so this is one thing where like legacy companies have seen कि boss if we are not investing into the right technology we are gone, right? And that's what one side like Amazon, there was like a driver. Another side was like a new age businesses, right? And so what's your view on quick commerce and like Amazon versus Zepto, or without naming, like quick commerce versus traditional commerce or e-commerce? yeah, see, definitely there is a space, and this is the outcome of the demand, right? डिमांड थी कि क्रिएट कराई? कभी भी होता है ना, कस्टमर पता नहीं होता. नहीं मैं बोलूँगा डिमांड थी. अगर आप देखोगे ना तो देयर वाज ऑलवेज अ नीड ऑफ कि यार डिमांड कहाँ से शुरू होता है मैं बताता हूँ. जब व्हेन लाइक वी वर लिविंग इन स्मॉल प्लेसेस सिटीज एंड ऑल कि यार लाइक नीचे से लिया परचून की दुकान से लिया, चाय पत्ती खत्म हो गई, मिल्क खत्म हो गया, किसी के यहाँ गेस्ट आ गए, right? So like we all has lived into the shared economy, right? And when like you are moving towards like a economy जो कि shared से थोड़ा capitalist वाले mindset में आता है, तो you don't want कि यार मैं किसी से favor लूँ, तो demand तो थी, right? Now the mindset purchasing power आ गई, right? And then players are solving, तो मतलब और obviously there is arbitrage of that. मैं बोलूँगा 20, 30, 40% thanks to the biggest driver of the Gen Zs and all, right? So largely but आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए डिमांड थी, राइट? बट जो आपने एग्जांपल दिया वो हमारे जनरेशन का है, हमारे पेरेंट्स जनरेशन का. ये शेयर इकोनॉमी थी कि यार नमक नीचे से ले आ, अभी कोई आ गया है बाद में हम ले आके दे देंगे आपको, राइट? आप भी एक टीयर 2 टीयर 3 से आते हो, मैं भी टीयर 2 टीयर 1 टीयर मेरे से आता हूँ, राइट? सो थी, राइट? बट जो अभी ड्राइव कर रहा है क्विक कॉमर्स, दैट इज मोर जेंजी. तो जेंजी को तो पता ही नहीं था, तो उसको तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो हुआ है ना कि अभी चाहिए, अब तो माइक्रो ड्रामा आ गए, हर चीज मुझे 1 मिनट में, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी समझाता है, क्योंकि डोपामिन ऐसा हो गया है कि आंसर मिल गया, क्वेश्चन आ गया, आंसर मिल गया, तो इसलिए प्रॉब्ली क्विक कॉमर्स चल रहा है. यार it's a like a amazing conversation to have, and like I'm taking in a very positive way. If you'll see like when we started coding, right, we were writing codes into like a black screens. ठीक है. आज के डेट में अभी लाइक वाइब कोडिंग आ गया. I was doing like my son is like 9 years old, turning to be 9 years this month, and then like मैं उसको वैसे ही हार्डवेयर की कोडिंग सिखा रहा था लास्ट क्वार्टर, एंड आई रियलाइज्ड कि 6 महीना पहुंचता था. इवन आफ्टर द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10-12 years आई डिड द कोडिंग इन 2 hours one nice Sunday. तो now like Gen Zs are like such a productive guy, right? They smart, that's why they call it smart generation. very very smart generation. मतलब अगर मैं देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट्स दो उनको, they have multiple ways to figure out the solution,
राइट. तो मेरे को लगता है कि सबके लिए वही 24 आवर्स होते हैं, राइट. इफ यू आर मेकिंग योर 8 आवर्स, मैं बोलता हूँ 8, राइट. सो 8 आवर्स इज लाइक अ much more productive, like a 24 hours, 16 hours. So you can have a balanced life and you can have a healthy life. Healthy life. You know, like FarEye side से मैं बोलता हूँ कि world 2 part में divided है, right? So one part of the world is like a economy where there is a less of the population, but you will have to fulfill all their demands, basic demands, right? So like वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस इंडिया को ले लेते हैं ना, परफेक्ट एग्जांपल है. आप यूएस ले लो, यूरोप ले लो, राइट. ज्योग्राफिकल कंडीशन टफ है, पॉपुलेशन, लैटम ले लो, गल्फ ले लो, एशिया ले लो, राइट. सो द इंटायर बेल्ट इज हैविंग लाइक अ हाईली पॉपुलेटेड. सो you use technology in the western world to get the visibility, to have the predictability, to use as a mean of the convenience कि बस मेरा कम effort में काम हो जाए, right? You use application softwares in these economy, this is my read, right? To increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the value of the time, right? So you will have to see your outcome in a different lenses, right? हम बोलते हैं, आपके इसमें क्या था, आपने हम भी ऐसे ही देखते हैं, आपने लाइक बनाया है ना, यू अर्न इन डॉलर, पे इन INR मोस्टली, यू नो. इसका एक चीज हो सकता है कि यार अगर आपने शुरू किया कि ब्लू कॉलर्स के लिए ठीक करना है, इंडिया के आपने ड्राइवर्स को पकड़, यहाँ से व्यू लेके आपने बनाया वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए. तो लाइक हाउ वाज इट, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू इंडियन ट्रक ड्राइवर्स, यू नो, हब मैनेजर्स, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर्स, and you build a product which will be adopted in a destination where probably those kind of insight might not work or might not relevant. Am I missing something? No, it's very interesting. But if you see the life of the drivers, right? So everywhere socially, like they are not below, in the bottom of the pyramid. If you rank on the scale of the payroll, right? So either like they don't have the permanent job, or they don't have education skills. Now like because of the gig economy is coming up in a different way, but if you'll see last 15 years, so and another comment, you know, like, and definitely there was an impact, but on the larger level there was also opportunity to monetize that. So we have done like a couple of acquisitions as well in the journey. So in 2018 we acquired Deeper Technologies. They have created technology for the long haul. तो FarEye के पास लास्ट माइल था, लास्ट माइल का रिवर्स फर्स्ट माइल था, हमने लॉन्ग हॉल वहाँ से किया. लाइक वी हैव डन द acquisitions over there. Then 2021 we have acquired another company, PY Technologies करके, where like they were having ERPs, CRM to manage the logistic companies. So what we thought, how we can become like while we are increasing the consumer experience, but a full stack for delivery management system, right? So and like saying delivery management, boss, like anything that is dealing with the outside four walls. वेयर हाउस के बाहर कुछ भी चल रहा है, FarEye should be there. Be it be like a ocean tracking, be it be like a rail tracking, be it be like a truck tracking. So our system is integrated with everyone, and you know, like horizontally we have expanded much, right? And right now, like we are present in 32 countries. We are connected with almost all the permissible countries by the US sanction committees to do the business, and integrated with their data points through ocean freight, through land freight, through air freight, and we are you know, like almost, you know, 80-90% of the countries that existing in the globe, any vessel is either moving from China to you know, Bay Area, any vessel is moving from Dubai to Australia, right? So you know, we are connected, and we have like linkage over there in the business, and we do provide like a visibility. You have lots of data points. So is it right to say you are not a transporter or a delivery company? No, you are more of a data company now, because you have so many data points. And correct. So we are like a true software company. So what is the end goal? It's very interesting now, like in the world of the AI, right? Before jumping over there, so
our data is not shareable, right? So we are like it's very Encrypted, encrypted. NDAs. Days वगैरह तो it's fine, but like working with a lot of Fortune 500 companies, right? Where like customer data is very important, SKUs level data is very important. But yes, if you're enterprise, then for you, like we have a lot of data where like you can take a lot of business decisions. We are helping our customers, like let's assume, I'll give you example of India to understand easy to the larger audience, right? So if there is some reason in the tier 2, tier 3 cities where like certain brands, let's assume shoes are like in high demand, then like we can guide those brand based on the heat maps and maximum first attempt deliveries that hey, like you should start your warehouse there, right? When you are talking about the quick commerce, then you can also insights, right? When we are working with a lot of brands, they wanted to work like a quick commerce and they have a lot of stores. So we are guiding them why to start your dark store. We have named like you start gray stores, right? So we are working in Gulf, we are working in India, we are working in multiple countries where like quick commerce is going on. So like you're also providing consulting, and then eventually, so for you it's not what transition, it's about you need to create exactly. It's a data driven. उनके लिए आप demand पहले बता रहे हो. It's a data driven. तुझे पता ही. It's a data driven transition, right? So जो consulting है वो data driven है, bottom up है, right? So think about like millions of the deliveries are happening while we are talking right now. In some countries, like while we are talking right now, per second we are delivering 5 parcels, 4 parcels. Right? Is it right way you're powering the delivering? Exactly. So like few weeks before I was in Philippines, and realized after 10 years, we move close to 40% of their e-commerce volume on FarEye. Wow. Right? And we were asking, that hey, I'm talking about one country, right? And then like all the government officials and the Ministry of Transportation, Health asked like, hey, wanted to discuss with you like our cost of logistic is like close to 28%, almost 30%, right? And definitely their architecture is like archipelago, 7,200 islands, lot of things. Then based on the data, we are going deep and we are asking that these are the costs where like you will have to bear because of the architecture. But these are the costs that is building because of the inefficiency. So the biggest driver, if you'll see, is the guy who is on the driving the digital economy, right? Why UPI is so successful? Why these things are so successful, right? Even like in one of the forum we were talking about last mile is, like a delivery management is one piece, but think about India is talking about like Atmanirbhar Bharat. I was speaking in one of the event recently. And asking about, see, like if you wanted to make like some of the Asian country who has done like a massive export, right? China le lo, Vietnam le lo, Indonesia le lo, Cambodia le lo, right? So if think about government can create a consortium with the a small manufacturer in Meerut, कि बस तुमको import export code का झंझट नहीं है, तुमको supply chain का झंझट नहीं है, हम इम्पावर करते हैं, इंडिया पोस्ट से तुम बनाओ और हम तुम बनाओ, एक प्राइस दो, बेचो, मैं डिलीवर करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो गया, राइट? सो आज की डेट में एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, लाइक यू हैव लाइक HSN कोड, GSTs, सो सी लाइक एंड कनेक्टिंग ऑल द नोड्स टिल द लास्ट लेग, राइट, इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप सोचो कि एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर जो मेरठ में बैठा हुआ है वो सोच सकता है कि मैं अटलांटा में कैसे बेच सकता हूँ, राइट? एक छोटा सा कारीगर जो कानपुर में बैठा हुआ है वो सोच सकता है कि यार मेरा कस्टमर मैनचेस्टर में कैसे बाई कर सकता है। एक बनारस की साड़ी जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है मॉस्को में, वो सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ से, and there is a lot of premium, right? Yeah. It's win-win. It's a win-win. It's win-win. They are getting right? something which is their standout. Correct. And here they are getting a rupee or a value which probably giving them premium to innovate further. Right. So our job is not only to talk about कि बस आप cost को कैसे optimize कर सकते हो. There are like a multiple avenues to open the business globally. Create right? more value. So we are working with a lot of postal companies globally, and like multiple postals. पोस्ट जो नाम अलाउड है मैं ले सकता हूँ, बता रहा हूँ कि
जैसे मलेशिया पोस्ट है, अलाउड है मतलब we have the permission to use the customer name. एंड जो अलाउड नहीं है वो प्रॉब्ली यू हैव डन अ वाइट लेबल फॉर देम. नहीं, हम तो फारे के नाम से ही बेचते हैं, बट लाइक इन सच अ कम्युनिकेशन इन द ओपन प्लेटफॉर्म, लाइक नॉट अलाउड टू टेक दोज नेम्स बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल, राइट, बिकॉज दे हैव लाइक अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और लाइक अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन सम ऑफ द कंट्रीज, राइट. सो इट्स आई एम ऑल्सो लर्निंग, राइट, कि ना. बट लार्जली अगर एशिया की मैं बात करूँ तो एशिया में देखो, जैसे हम मलेशिया पोस्ट के साथ काम करते हैं, राइट. 200 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यू नो लाइक इट्स नॉट इजी कि आप 200 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट ड्राइव कर रहे हो, राइट. एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम इंडिया, यू नो, ऑफ मलेशिया व्हिच इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट. मल्टीपल एग्जांपल, लाइक हम ओमान पोस्ट पे काम करते हैं, स्लोवेनिया पोस्ट में है, मतलब ये सब तो मैं परमिशेबल नेम ले रहा हूँ कि मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी, राइट. सो तो वहाँ पे वी नो कि व्हाट इज द पावर ऑफ द इकोनॉमी. इवन लाइक व्हेन I'm meeting the officials from the Indian Postal Services and asking, like, there are a lot of opportunities to do that, right? And see, it's not about only FarEye. There are a lot of players who will come, create the consortium, they'll contribute, and everybody will grow. ONDC is a perfect example. ONDC is a very amazing example. They are trying to solve, and definitely creating more level. They are connecting. They are doing experiments. But you know, like, more than that, I'm talking about, like, if we can figure out the small bucket, then connect with the mainstream, right? Because see, like, it's a great example. ONDC, I'm also like one of the part of the program validated tech. तो Vibhor and all, right? So knowing जब registration नहीं हुआ था तब से हम बैठते थे with those days, like जो भी secretaries हुआ करते थे. तो and you know, like, I'm always a great advocate. Even not only that, contributed to the new logistic policy from the private bodies, challenging government कि boss, see, like, हम 16% GDP से हम 9% logistic cost पे आ गए. So our GDP cost of logistic is close to 9%. Still it's a massive. आपने मतलब मैं पहले ONDC का बताता हूँ. There is like amazing platform, right? और अगर आप देखोगे तो इंडिया में ONDC जिस तरीके से चल रहा है, सो मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर. बट आई एम टॉकिंग लाइक लेट्स फिगर आउट 2-3 ड्राइवर्स एंड पुट मच मोर फोकस ओवर देयर. वेल, लाइक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कम्स फर्स्ट. कि अगर आप लॉजिस्टिक को मैच करा दिए और मार्केट ओपन अप है, लाइक विथ the guidance of Honorable Prime Minister, right? Like, we are talking about the Atmanirbhar Bharat, Make in India program, but where will you sell? Where is your consumer? Definitely, like, you are making for your own consumption and you are making for the consumption outside India as well, right? Their own consumption will pay you less, outside India will pay you more, might pay you more, right? Or like, and it also put you on the map of the world. Map of the world. So the soft power is so important. Correct. And so you would be part of the global supply demand, right? So वहाँ पे if we'll see, like, the biggest pain still, like, I'll say in India is like connecting the dots of the logistics, right? मतलब अभी भी मैं बोलता हूँ कि there are a lot of opportunities for Indian Railway, for India Post to investments हो रही है, सब कुछ हो रही है. बट प्रायोरिटीज़ जो है कि यार, लाइक, अगर हम जैसे मैं एग्जांपल दिया कि छोटे से, लाइक, कैसे हम मैन्युफैक्चरर को इनेबल करें, सॉल्व करें उसकी प्रॉब्लम्स को. एंड इन इंडिया, you know, like, through NDC came to know there are close to 55-60 million SMEs. Yeah, it's a massive opportunity, massive. So I was in US traveling in United Airlines, right? And luckily I got someone near to me. He was like, that guy was working in a procurement team of United Airlines, right? They are the school of thought, you know, who's like, यार प्लेन तो वहीं जाता है, तो इकोनॉमी में भी ट्रैवल कर लो. एंड दे आर लाइक, यार अगर तुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, एंड इफ यू ट्रैवल फ्रॉम बिजनेस, यू नो, देन you will always get someone who is like minded or probably at same level or higher ahead of you. What is your view on this? Yeah, it's very interesting. So like, as a part of the culture, no, like, we are one of the Frugal founders. राइट. कॉकरोच तो लार्जली ना, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे कि इवन लाइक एज अ फाउंडर
we are allowed to spend night in the 5-star hotels. वो खुद से ही नहीं हो पाता. Even मतलब तो भी अपने को कॉन्शियस लगता है कि यार correct. इससे मान लो and I'm sure like lot of our customer will see and came to know कि या तो हम जब कोई कस्टमर इवेंट कर रहे होते हैं राइट कि पूरा रात करना है, then there is no option. फिर हम then it's a part of the business, right? But like during the travel and all, what you need like 6 hours of like a bed, 7 hours of the requirement of the room, not more than that, right? And definitely like all those budget hotels are there globally, right? Same way like if you don't have like a एकदम से लंबी फ्लाइट के बाद मॉर्निंग मीटिंग, तो there is no point traveling to the business class, right? आप इकोनॉमी क्लास में करो. मतलब वी आर ऑल्सो माइंडफुल ऑफ द टाइम कि अगर पता चले कि यार यू हैड यस्टरडे मीटिंग, टुमारो मीटिंग, टाइम बचाना, आप दोनों चीज नहीं बचाना चाहिए, राइट? तो वी आर बैलेंसिंग. मतलब फ्रूगल का मतलब वी आर माइंडफुल विद द क्वालिटी ऑफ टाइम, नॉट ओनली मनी. तो वो बैलेंस करके चलना चाहिए, राइट? कि अब पता चले कि लाइक टुडे यू मेट विथ वन ऑफ द strategic customer in let's assume Philippines में कर रहे हो, then you are going to North America to meet like afternoon से की स्टेक होल्डर चल रही है, दोनों ने टाइम उतना कट टू कट दिया कि आपके पास ऑप्शन नहीं है. देन डेफिनेटली लाइक व्हाइल यू आर ऑन द कैफीन बट यू आर नॉट अलाउड कि बॉस लाइक टाइम जोन शिफ्ट है, सोना नहीं है, तो इट्स बेटर कि टेक सम रेस्ट, राइट? चल रहा है कि नॉर्मली जो हम ट्रैवल करते हैं ना, वो वी हैव क्रिएटेड लाइक अ हैबिट्स कि हम वीकेंड में कर लेते हैं to save the time. Right. वो फिर घर पे पिटाई होती है अलग बात है. हाँ. But I don't want to touch that part, right? But देखोगे तो most of the Sundays, right, are going. और हम क्या करते हैं कि जब भी फ्राइडे होता है like pack your bag and came back to the your thing. तो उससे काफी टाइम और पैसे भी बचते हैं, right? And definitely that is one thing where like I'm there with you कि लाइक कई बार लगता है, इस साल ही मैं सोच रहा था, इट्स अ ईयर इन टाइप्स, तो कि लाइक ट्रैवल हैपेंस लाइक इफ यू आर अ ग्लोबल ट्रैवलर देन लगता है यार एक बैग पैक वो ड्राई क्लीन होके ना एक बैग तो पैक रहता है कि लाइक मतलब यू डोंट नो कि यार अपॉर्चुनिटीज आपको आई एम श्योर a difference between good and a great founder is they seize the opportunity कि यार अब कल सुबह जाना ना, चलते हैं और whenever you go you know those are the meetings जो आपको प्रॉब्ली डेल्टा देते हैं. काफ़ी मिक्स टाइप्स हैं, लाइक आई विल से रीजनली एज वेल. जैसे मैं वेस्टर्न वर्ल्ड करता हूँ, राइट? तो लाइक विद द माइंडसेट एंड ऑल लाइक इट्स वेरी इजी टू सेट लाइक अ 1 quarter बिफोर का कैलेंडर, राइट? बट यू नो लाइक इफ यू गो टू डेवलपिंग ज्योग्राफी, वो बहुत लास्ट में पता चलता है, वो भी नहीं पता वो इवेंट कभी भी कैंसिल भी हो जाता है, राइट? तो अभी जैसे लाइक I was in Hungary, you know, and during my date of the Hungary, like before that I was in Zurich, right? So Zurich, I had call with one of the prospect, and my person told, hey, like in Dubai, that they wanted to see you, right? Because and then like my team checked, like there is no connecting flight. The date that was supposed to have meeting on that day, like on the 2nd December, I still remember. So that was ki boss, like let's request for the 3rd because it's coming on the right time and I'm not allowed to cancel those meetings that has been prefixed, right? So होते हैं कई बार लाइफ में ना, then like your other plans are getting shifted, then you are pushing back your 3rd, 4th meeting, 5th meetings, requesting. So in the enterprise business as an entrepreneur मैं बोलता हूँ कि यार हर एक लोगों को चाहिए कि जितना प्लान कर पाए बेटर है, रैंडम चीज़ अवॉइड करना चाहिए, राइट? इवन लाइक फॉर आवर पॉडकास्ट आपने देखा होगा कि टीम मतलब हम साथ 2 महीना पहले ये कैलेंडर को फिक्स कर लिए थे, राइट? सो वो लगता है कि हम दोनों यहाँ पे हैं, सेम सिटी में हैं, राइट? like probably 10 kilometer away, hardly 15 minutes it took me the moment like I started like तो मैं मैसेज के 15 minutes but like we were engaged like a 2 months before blocked calendar. तो कई बार इंडिया में लगता है यार बंदा हाँ इतना क्या बिजी है ये, हाँ एग्री टोटली विद यू एंड पीपल टू अंडरस्टैंड दिस. हाँ तो क्या है कि जो जैसे आप एंटरप्राइज बिजनेस में हो आप समझते हो, बट कई बार लोगों को लगता है यार गौतम को फोन किया भाव खा रहा है, सौरभ को फोन किया नहीं आ रहा है, बट लाइक दिस इज द लाइफ. नहीं एब्सोल्युटली और also depend on the stage of company and life company. हाँ, I mean I'm sure जो पहले 5 साल हो गए आपने उसमें आप बता अभी आना है मैं आता हूँ, you know
करेक्ट तो स्टेज ऑफ कंट्री एंड कंपनी एंड लाइफ भी चेंज हो जाती है. हाँ, तो देखो आई थिंक माइंडसेट तो सेम होता है, राइट. बट क्या होता है बिगिनिंग में आपकी फॉरवर्ड कमिटमेंट, अभी क्या है कि आपकी फॉरवर्ड कमिटमेंट भी हो चुकी है, क्योंकि लाइक एक स्केल पे हो, राइट. सो यू हैव एंड दो स्टेक्स आर आल्सो हाई स्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या होता है बिगिनिंग में लाइक व्हेन यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज, तो दैट इज मोर हसल, आपका कैलेंडर कैसा, वन बात कैसा है. अभी जब पता चलता है कि लाइक यू हैव बकेट आउट टाइम फॉर द स्पेसिफिक पार्टनर, स्पेसिफिक कस्टमर्स, स्पेसिफिक मार्केट, टाइम जोन डिफरेंट है, तो आपके पास फॉरवर्ड वर्क भी है. ऐसा नहीं कि आप सेम वे में हासिल कर रहे हो, आप अभी भी ट्राई फिट कैसे करें चीजों को. यू आर बैलेंसिंग लाइक. डू यू मिस द इनिशियल और नाउ? बिकॉज I mean, I relate where I'm coming from. So there were time I'm like, यार मुझे कोई randomness नहीं करना. And there are time I'm like, I thrive on spontaneity and randomness. So what is your zone? Because जहाँ तक मुझे लग रहा है I can sense it. You are also very random and spontaneity within organized thing. You know, and most of your wins were because of the spontaneity, because of that randomness. But do you think like अब मिस करते हो या which is your zone now? जब क्या होता है ना कि रूम थोड़ा वार्म होता है, तो देयर इज लाइक अ 2 पैरामीटर्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. गुड आंसर, राइट. गुड एग्जांपल. तो जो आप रैंडमनेस एंड प्लान्ड बोलोगे ना, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट. सो यू विल हैव टू बैलेंस, एंड डेफिनेटली लाइक समटाइम्स यू विल मिस समथिंग डिफरेंट, राइट. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, नो, लाइक entrepreneurship is always like driving a bike on the mountain. And when like you are putting pressure on the pedal when you are driving not a motorbike, like a bicycle, right? More the height you are going, you will have to put much more pressure on the pedals, right? So you know you are not allowed, even like if you put less pressure on the pedal, you will fall down. So much more, you're always against the tide, or you're pushing the boundaries, right? So like it's surfing in the opposite direction, right? Not in the तो मैं बोलता हूँ कि हर एक entrepreneurs को ना कि and learning that thing to maintain the caliber, to maintain the temperament, to maintain the pressure point, right? Because see like जब आप ज़्यादा प्रेशर पॉइंट पे जूझते हो, तो वहाँ पे देन योर पेशेंस लेवल इज मिनिमल. इट्स लाइक अ ब्रेकिंग लेवल. जब आप जिम में वेट लिफ्ट करते हो, राइट. सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन यू नीड व्हेन यू आर लिफ्टिंग हेवी वेट्स, राइट. सो मेरे को लगता है कि जो टाइमिंग है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नाउ व्हाट यू नीड की इट्स अ मिक्सचर, राइट. एंड building a great business is something like that कि you will have to balance that, right? वो स्प्रिंट भागनी है मैराथन माइंडसेट से एग्जैक्टली कि स्प्रिंट भागनी है, ऐसा नहीं कि हम इंजर्ड हो जाए स्प्रिंट के चक्कर में, बट वो मैराथन माइंडसेट चाहिए. और एग्जैक्टली एज यू टोल्ड कि स्प्रिंट माइंडसेट से मैराथन करनी है, कि यू विल हैव टू, बिकॉज कल्चर शुड बी ऑलवेज लाइक you know very binding force, because see like innovative things will come through the you know like lot of different thought processes. So ये बहुत important होता है. मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ अभी, और आपने हॉस्टल की बात करी थी, you know, and that is where I will integrate university living, right? But you, and I always say this, right? You find your founders, soulmates, not in your classes, but in your hostels or with the people you stay. I found my founder, he was my roommate, right? How important is accommodation? एंड उससे पहले एक और पीछे आता हूँ, हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन. एंड आपकी एजुकेशन इंडियन एजुकेशन रही है, राइट, और आपने एक ग्लोबल बिजनेस बनाया है, राइट. इफ आई गो 20 years बैक, राइट, एंड इफ यू वुड हैव नोन और यू हैव एस्पिरेशन दैट यार एक ग्लोबल बिजनेस बनाना है, सो डू यू थिंक इफ यू वुड हैव हैड अ अपॉर्चुनिटी टू study in UK or Australia or US, or probably more global education than Indian education, it would have helped you, and probably your journey would have been faster and bigger? Yeah, it's a very interesting one. Two part of the questions. You told like a hostel में बाद में आएंगे. चलो पहले education पे, because lots of like now we are parents, right? So most likely, you know, we'll ask our kids to apply for IITs, IIMs, but साथ में background भी देना है कि यार एक person ही होता है, तो at least चलो we are in a position जहाँ पे we can ask them, okay,
if IIT doesn't happen, if 12th doesn't happen, heaven doesn't fall, you have an option, so as a parent you will also decide Indian education or education overseas education. But if I ask you, अगर या 20 साल बाद मैं FarEye का CEO हूँ और मैं ग्लोबल बिजनेस चला रहा हूँ जहाँ पे मुझे न्यूएंसेस चाहिए, आप मुझे हिस्ट्री समझ आनी चाहिए, मुझे न्यूएंसेस आनी चाहिए, मुझे कल्चर समझ आना चाहिए, सो डू यू थिंक अगर मुझे ओवरसीज एजुकेशन मिलती बिल्कुल तो हेल्प इतनी फास्ट होती, बेगर होती? बिल्कुल. सो ये काफ़ी फैक्चुअल लगता है मेरे को कि जैसे जब आप एजुकेट हो रहे होते हो ना, तो जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, राइट, वो इंसर्ट हो रहा होता है. एंड दैट वाज वन रीजन कि मैं इंजीनियरिंग क्यों सेलेक्ट किया. वो मेरा पर्पस ड्रिवन था. उसके चलते नॉट पुश्ड बाय योर पेरेंट्स और नो यू एग्जैक्टली. सो दैट वाज द ब्लेसिंग्स कि एंड दैट्स व्हाट आई ड्रॉप्ड लाइक अ कपल ऑफ इयर्स इन फिगरिंग आउट कि मेरे को इंजीनियर क्यों बनना है, राइट. सो इसलिए मैं और नेचुरल तरीके से बता सकता हूँ कि अगर उस टाइम मैं यहाँ पे होता, तो इतनी क्लैरिटी थी आपको 16-17 साल में यार, लाइक समहाउ गॉट लाइक अ पैशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द स्कूल डेज. तो वहाँ से एक आया कि यार लाइक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जबकि कंप्यूटर नहीं था घर में, लैपटॉप नहीं थे, ऑफ कोर्स मोबाइल फ़ोन नहीं था, हम वो केबल वाले फ़ोन से बात करते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, फिर कलर टीवी आई, राइट. तो वो खोल के देखना, रेडियो खोल के देखना, उसके स्पीकर के मैग्नेट देखना, तो वो सब इंटरेस्ट के चलते लाइक समहाउ बाय 10th-12th वो डेवलप हो गया था. तो लार्जली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जब आप स्टडी करते हो तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू इमेजिन द वर्ल्ड बिफोर वैलिडेटिंग, राइट. एंड यू आर लर्निंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. अब मेरे को कभी भी हिस्ट्री में जितना इंटरेस्ट नहीं था अब है. बिल्कुल है, मतलब करेक्ट. सो अब मैं क्या कर, यू विल सरप्राइज टू नो, मैं साउथ अफ्रीका एंड देन लाइक रिसर्च अबाउट दैट. मैं बहुत कम बुक पढ़ता हूँ. मतलब अगर आप बोल दोगे एज अ फ्रेंड कि यार ये 2-3 बुक पढ़ लो, आप खरीद लोगे, वो भी एवरी रीडर नहीं हो. हाँ, मतलब आई एम नॉट अ नेचुरल रीडर, राइट. मैं तो पॉडकास्ट अगर मिल जाए तो लाइक देन आई रेड अ बुक रिटन बाय अ इंडियन गाय अबाउट अफ्रीका. His name is Baljinder Sharma, right? Like amazing guy. Reason being कि मैं इंडियन हूँ, अगर उसके got your point, yeah, please. और उसने कैसे डिफाइन किया होगा, तो बड़ा रिसर्च करके वो बुक मिला मेरे को. एंड अभी जब इंडिया आए हुए थे तो रीजन बिंग की बॉस, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल, राइट. यू विल हैव टू सी, एज आई ऑलवेज से, बिजनेस इज द फील. यू आर बाइंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, राइट. यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग. What is the 3 things that is going to matter in our life? तो बहुत वाइट बोर्डिंग कर ली, डिबेट किया, बहुत सारे लोगों से मिले, पेरेंटिंग में जो होता है ना सीखा, तो लगा यार 3 चीज़ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक एंड वांटेड टू टेल लाइक माय लर्निंग्स एज वेल. तो फर्स्ट थिंग इज लाइक अ कम्युनिकेशन, राइट. सो कम्युनिकेशन, आई एम नॉट आस्किंग, जरूरी नहीं कि इंग्लिश कर पाए, स्पेनिश करो, बिकॉज सी लाइक देयर इज नो लिमिट, राइट. जब मैं अब ग्लोबली देखता हूँ कि इंग्लिश इज नॉट इनफ. हम तो फिर भी 3-4 लैंग्वेज बोल लेते हैं. हाँ, हम भी फिर भी बोल लेते हैं. पीपल, ये तो इंडिया में ही है जो हमें जज करते हैं कि इंग्लिश में करेक्ट क्रॉस बोल दिया, क्रॉस बोल दिया. भाई मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है. आपको बोलता हूँ कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, पूरी उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं. तो आप अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, नॉट द लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कि अपना आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे हो, या तो आपकी प्रोडक्ट हो या प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो लोगों को, तो फिर लाइक इट्स अ सोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल. सोल्यूशन मिलना, तो कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, राइट. सेकेंड पार्ट इज लाइक अ लॉजिक, राइट. कि बॉस, लाइक व्हेन यू विल डिस्कस समथिंग, तो योर कन्वर्सेशंस वुड बी ऑलवेज लाइक अ लॉजिकल एंड वेरी मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल, राइट. एंड थर्ड जो मैं बोलता हूँ कि योर नेटवर्क, राइट. नेटवर्क नॉट मीन्स फॉर मनी, राइट. द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, जैसा आपने अभी कन्वर्सेशन में बोला ना, फॉर मी एज वेल द इम्पोर्टेंट पार्ट इज लाइक माई बिगेस्ट wealth is like my people. Your network. I value more than like my net worth is network, right? जैसे कि मैं कोई भी नया कंट्री में आप छोड़ दो मुझे 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, थर्ड डे से there would be a guy who will see कि dude like next time like this weekend you are staying at my house. अगर वो डिबेट नहीं हो रहा है तो मैं उस कंट्री में दोबारा, राइट. एंड ट्रेवल्ड मोर देन 47 कंट्रीज. देखो इंडिया क्या सिखाएगा आपको,
इंडिया आपको एफिशिएंसी सिखाएगा, हाउ टू थ्राइव इन chaos सिखाएगा, इतनी मतलब मजेदार चीजें सिखाएगा। यूरोप क्या सिखाएगा? पूरा रिवर्स सिखाएगा, राइट? आप मान लो कि अगर मान लो कि आपको कहीं पे लैटम में जाने का मौका मिले तो आपको वो डिफरेंट डीएनए सीखोगे, यूएस जाने कैपिटलिज्म सीखोगे, राइट? तो लार्जली यार मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका 20 साल डिफाइंड है ना लाइफ में, या 25 साल डिफाइंड है, तो पहला 10 साल का ग्रोथ स्टेज मान लो। मैं तो लाइक पुशिंग द किड कि यार हर एक 5 साल तेरे को डिफरेंट कंट्री में रहना है, डिफरेंट टाइम जोन में रहना है, राइट? It's not about like a give and take relationship. Amazing. It's all about like if you are going to create the impact, right? Yeah. You need to be prepared for it. You're a global citizen. आप सोचो ना आज के ना ये इस बार तो मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ। हाँ, no same यार, मतलब मैं तो बोलूँ इतना रिसर्च किया हूँ, dude. Like I met with the board member of the ICSC, I met with the board member of CBSE, I like इंडिया लेवल बता रहा हूँ, स्टेट बोर्ड, मैं ICSE प्रोडक्ट हूँ। हाँ, तो सबका रिस्पेक्ट है, सबकी स्ट्रेंथ मोर और लेस। मेरे को लगा कि यार, और मैं बच्चे को बोलता हूँ तेरे को सारे करिकुलम में पढ़ाऊंगा, नॉट ओनली IB। क्या है या फिर तुझे क्या, वेयर आर यू थ्राइविंग? मैं तो बोलूँ 3 थिंग्स, ठीक है? मतलब 3 थिंग्स इज लाइक इतनी वाइट बोर्डिंग के बाद वो एक पिरामिड बना दी कि 3 चीज पे आके लैंड करती है, और 25 साल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 10 years 5-5-5 करके, राइट? कि 25 साल तक उसको मतलब एटलीस्ट द एबिलिटी टू बिकम लाइक अ ग्लोबल सिटीजन शुड बी देयर, राइट? तो बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड द एक्सपोजर। एग्जैक्टली। आई ऑलवेज से अगेन, लाइक आई विल गिव यू अमेजिंग एग्जांपल कि सी लाइक गेटिंग द इंफॉर्मेशन इज ओनली लाइक अ ड्रिंकिंग अ प्रोटीन पाउडर, बट यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट गोइंग टू जिम, राइट? तो बॉस आप ना खाली मसल्स जो बिल्ड होगा ना प्रोटीन पाउडर पीने से नहीं होगा, राइट? एफर्ट तो लगाने पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंटरैक्ट। बट डोंट यू थिंक वो जिम, वो वर्कआउट इंडिया की यूनिवर्सिटीज या इंडिया के एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा? Again, खासकर अब, because again I'm telling you, like you know, like your biggest motivation will come in the environment. So I'll ask like even you कि कितने टाइम आपने ट्रेडमिल घर में खरीदा होगा? मैं तो यार 2 बार खरीद के फिर देखा कि यार उसमें कपड़े सूखते हैं, right? So very candid answer, right? But like the moment you will go to the, yeah, the moment and I checked with lot of my friends, right? वो होम जिम सेटअप है, ये आप बाद में कर सकते हो, आप बाद में को हैबिट बन गई, आप आ जाओ इंडिया से ऑपरेट करो, है ना? बट पहले अगर कर लिए तो बॉस वो 15 डेज का मोटिवेशन है, 21 डेज का है, राइट? या तो सक्सेस रेट लाइक डेसिबल परसेंटेज में है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट। आई विल गिव द एग्जांपल दैट ओनली दोस 1% व्हिच आर सेल्फ ड्रिवन, सी आई व्हेन आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट एंड यू नो आई एम ऑलवेज चैलेंजिंग माय थॉट्स और माय नैरेटिव्स। मेरा तो सिंपल है कि यार सबको बाहर पढ़ना चाहिए, यू नो, इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, you know, and it's not ROI that आपको एक साल मिल जाएगा, like we all been doing decently okay because of 10-15 years of like consistently doing the same thing, right? But at the same time, you know, as a parent, you know, who probably is not entrepreneur or probably who is very like saved their money very hard and 2-3 बच्चे हैं, right? उन्हें पता है कि यार अगर भेज सकते हो तो you know भेजना चाहिए, but ROI तो आएगा नहीं एकदम से, you know, 50 लाख लगा हुआ जॉब प्रॉब्ली हो सकता है मिले ना मिले, right? And it's a reality of the world, right? So then this is my medium to challenge कि because मैं तो बिजनेस से चला ना कि बच्चा करूँगा, तो when I was with संजीव सर, I asked the same thing. There was a time, you know, when I was questioning कि यार होम ट्यूटर करते हैं ना फेथ को, so faith is my daughter, right? And we were very convinced कि यार होम ट्यूटर करते हैं, but then I realized कि यार मैं अभी तो मैं बोल रहा हूँ मैं टाइम दे पाऊँगा, right? और मेरा भी तो होराइजन इतना सही है ना, कितना सही, correct, right? And same thing I question that why education in the world of AI, in the world of free education by YouTube and all Google का AI free है, सब कुछ free है, but there are only 1% of people who are self-driven, you know, and those self-driven are dropouts also, and they have done really big thing about it, but 99% need structure environment. Coming on your point. So अगर आप इसको वैसे देखो कि it's a very good point, right? कि जब आप मतलब कैपेबल कम होते हो या लिमिटेशन ऑफ बजट्स होते हैं, देन बेस्ट पार्ट वुड बी लाइक आई विल रिकमेंड कि आप एक बार मैक्सिमम स्ट्रेच तो मारो, राइट? दे लाइक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, राइट? स्कॉलरशिप्स है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अमेजिंग एग्जांपल, राइट? जो मैं
लोगों को समझाता हूँ, लाइक व्हेन आई एम एड्रेसिंग लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मासेस, या जब एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट में बोलता हूँ, बंच ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं सुनने कि बॉस आप एक बार ना ऑलवेज कैलकुलेटिव रिस्क लो, बट कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब पैसिमिस्टिक, राइट? अगर मान लो कि इफ यू कैन स्ट्रेच इतना तक तो आप 20% और आर्बिट्राज लो, राइट? Then you calculate. That is one part. Another part, like during my global travel, I met a lot of folks, right? Interacted, Asian, Indian, especially. So even like a small countries to a big countries. So the best part कि every job is like a very respectful job. Yeah. हम इंडिया में बोलते हैं यार कैब ड्राइवर नहीं बनना है, ये नहीं वहीं करना जाके है, हम ऊबर तो बनने चले जाते हैं. हाँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, पास नहीं है पैसे, ठीक है, if somehow I'm getting the admission in the University of Berkeley's, right, और मान लो कि लंदन के मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटी में कहीं पे, एंड इफ आई हैव टू ग्रो, इफ आई हैव टू रियलाइज, तो फाइन घर से कि यार मत भेजो पैसे, मेरे पास 8 घंटे बचे हैं, मैं 4 घंटे को कैपिटलाइज करता हूँ. बॉस लाइक दे आर लाइक अ मैकडोनल्ड्स ऑफ द ग्लोब, KFC ऑफ द ग्लोब, उबर है, इतने गिग वर्किंग वाले इन्वायरमेंट है, आप अपने आप को पुश करके आप रनिंग कॉस्ट निकाल सकते हो. एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली. तो और दिस इज नॉट बैड. बस in fact, you know, I always say same student in Canada, from Punjab, when they go to Canada or they go to UK, करेक्ट, they don't shy away to work in हाँ. KFC or because साथ वाला क्या सोच रहा है वो बहुत इम्पैक्ट करता है. आप सोचो ना कि आप आज के डेट में आप MBA करके इंडिया से भी कर रहे हो, अगर आप जा रहे हो, मान लो कि यू आर मैनेजिंग लाइक टन्स ऑफ द यू नो द फील्ड गाइज और समवन, तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, राइट? तो मैं बोलता हूँ देयर इज नो जॉब. अभी व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू इंडिया, यू नो द गाय लाइक who drove me to the airport, right? That Uber driver was working in one of the amazing MNC, was VP, might be earning millions. ठीक है, तो इट वॉज लाइक अ ग्रेट इंटरेक्शन बिकॉज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में VP था. आई टोल्ड डू लाइक नो आंसर पता ही है कि बॉस यहाँ पे तो एवरीथिंग इज गुड. तो इट टोल्ड कि बॉस सी लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इकोनॉमिक्स. माई हाउस इज लाइक अ 40 miles away from my office. Your hotel was near to my office. Right. So, and my house is like just 3 miles away from airport other side. I own my Uber. So he told like a very interesting thing कि यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ like I'm not a guy कि मैं अकेले रहूँ. I need people to कोई बात करने वाला मिले. And good that like you are touching me. So मैं बोलता हूँ जब मिलियंस कमाने वाला वो काम कर रहा है तो बॉस आपको तो जरूरत है. वही लॉजिक वाली बात करी ना आपने. हाँ, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो इमोशन इंपॉर्टेंट है, बट यू नीड टू बी मोर लॉजिकल. द मोमेंट यू टोल्ड मी दिस कि यार ऑन द वे है यूनिट इकोनॉमिक्स बैठता है, एंड देन he also understood something that I don't want to drive alone. यार वो पहले वाली बात नहीं है कि आपको जाके ट्रांसपोर्टर के पीछे करना है, जी हजूरी करनी है, और रिस्पेक्ट वहाँ आज के डेट में इट्स लाइक एवरीथिंग इज लाइक अ वेरी 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 लाइक अ प्रोफेशनल बॉडीज, राइट? इवन लाइक आई हैव सीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेलबर्न सिडनी ट्रैवल कर रहा था, देयर वाज यू नो सम यंग बंच ऑफ पीपल इन द रेस्टोरेंट्स, राइट? I like out of the curiosity asked, hey, like you are looking like an Indian, you are working. So very proudly, yes, like I'm studying in the Queensland University, and you know, like I'm getting 4 hours, and I'm not dependent on my parents' money, right? Because and that builds characters. Yeah, that builds character, and you know, like, and then that guy was working on the AI projects and studying all those AI things, was like, and one of the amazing University of Australia, right? So largely क्या होता है कि वो सब mindset से ना निकलना पड़ेगा. You will have to figure out अपने लिए मतलब कुकिंग करते हो, अपने लिए ये करते हो ना, तो it's the same profession, right? Agree. And you are not going downstream, like downstream करने के लिए वहाँ पे machines होते हैं. You are not going to clean like a you know. करना ही पड़ गया. नहीं करना ही पड़ गया. मैं तो करना ही पड़ गया. इनफैक्ट मैंने चाय से मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम था. तो बोलता हूँ कि बॉस वो तो आई एम टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द केसेस कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज इतने हैं, ऑप्शंस इतने हैं, आप मोनेटाइज करो. एडवांटेज क्या है? मैं तो बोलता हूँ कि इवन
lot of my relatives, like my sister kids, are like from the tech background, and yeah, so like I always say कि you will have to learn, like कि like how will you productize this? Start like a positioning, start Good you know. point. हाँ, तो होता क्या है कि बॉस, you challenge your boss, no, like what is problem? With your logic, challenge your boss. Why you are doing like this? If you'll do like this, you will get like a 10x more customer, 5x more customer. This is the logic behind, right? Like let's challenge the your peers Yeah, as well, right? yeah. So यहाँ पे तो मेरे को लगता है there is no brainer. मतलब अगर किसी को भी बाहर जाके पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ नहीं तो इंडिया के 10 स्टेट में पढ़ो. Totally with you. Just get out of your home. हाँ, ज़्यादा जल्दी आ सकते हो उतना बेटर है, बट जितना ज़्यादा जा सकते हो, आप मेरठ में हो आप दिल्ली आओ, आप दिल्ली में आओ मुंबई जाओ, मुंबई में हो आप करेक्ट. आप मलेशिया जाओ. जो टोटली विद 4 साल का इंजीनियरिंग का हॉस्टल लाइफ सिखाया ना, मतलब आई वाज लाइक एज आई टोल्ड कि ग्रोन अप अमॉन्ग लाइक 4 सिस्टर्स, पेरेंट्स, पैम्पर्ड किड, प्रोटेक्टेड environment, and then like tier 2 tier 3 cities were like, and then middle class family. तो सोच ही नहीं सकते हो, मतलब लिटरली फर्स्ट मंथ ऑफ द हॉस्टल लाइफ रोना आता था, क्या खाना मिल रहा है, राइट? बिकॉज यू आर गेटिंग ट्रीटेड लाइक अ रोबोट. मेन्यू फिक्स्ड है महीने के लिए, 1.5-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए. द मोमेंट लाइक यू स्टार्टेड कनेक्टिंग पीपल एंड ये, तो देन यू आर मिसिंग द लाइफ कि बॉस वो 4 साल निकल. बेस्ट टाइम होता है. बेस्ट टाइम, मतलब मेरे को लगता है कि शायद फाराई भी नहीं बनता है ना, फाउंडर भी नहीं होते, एक्सपोजर भी नहीं मिलता, हम साथ में प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, राइट? सो आप बाउंड्रीज पुश करो, और देर इज नो डिबेट, एंड दिस इज द ओनली गोल्डन पीरियड, trust me, like I'm seeing everyone where like you are almost on the verge of becoming independent. You're not a kid, Yeah. right? Like a growing kid of 5-6 years is, right? Where like you need lot of Hand-holding. right. Parents का line of sight चाहिए. Now you're on that verge. आप 18 years पे हो, 16 years पे हो, or like you have won the trust of the parents, you have won the trust of the society, you have won the trust of the something, you have some capability, and आज थे 16 से 25 साल की एज में बस वो बाउंड्रीज को, राइट? सो मेरे को लगता है हर एक को करना चाहिए. एंड टू योर पॉइंट जो आप बता रहे थे, ऑप्शंस आर मैसिव. मतलब यार किसी का निट नहीं हुआ परेशान हो जाता है, किसी का ग्लोबल एजुकेशन में एंट्रेंस नहीं हुआ परेशान होते हैं, IIT नहीं हुआ परेशान होते हैं. मैं बोलता हूँ इट्स फाइन फॉर दैट टाइम पीरियड, यू आर ऑन दैट. सी लाइक क्या होता है ना कि जो कंसिस्टेंट रेशर होता है ना, वो रेनी वेदर में ही रेस विन करता है, राइट? तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बॉस आप थोड़ा सा पिच स्लिपरी है, आप 2 ओवर 3 ओवर पीछे आ गए, कोई बात नहीं. And it's always it's okay to take 2 steps behind. Yes. Even there's a saying na that even a lion, before attacking, its prey, they take 2 steps behind so that they have a more impactful force. एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं चीज़ बोलता हूँ. मेरे टीम में एक लाइक कन्वर्सेशन कर रहा था. देयर इज वन gentleman in my GTM team and asking, Gautam, how are you feeling now? Like, and I'm IITian, my boss is also IITian, you have someone from IIM as well, right? But you are not, right? So it's not about the reporting structure and all, right? And then it's all about the environment where like you all are contributing. तो मेरे को लगता है ना कि आज के इन्वायरमेंट में जब सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, तो एक सर्टेन लेवल के बाद ना आप वो ब्रांड में फर्क नहीं पड़ता. It's a good starting point. Good starting point. It can get you a good job. हाँ. It can definitely filter you out. पर उसके बाद आपको इवॉल्व तो होना ही है. करेक्ट. रोज होना है. तो हाँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मतलब समथिंग इज बेटर और समथिंग इज नॉट बेटर. मेरे को लगता है कि ना उस जर्नी में आप इतने आगे चले जाते हो कि 10 साल 15 साल के होराइजन में जब वो रियलाइज हुआ. अभी मैं लास्ट वीकेंड की बात बता रहा हूँ कि मतलब बोला हाँ यार, मतलब यू आर टेलिंग फैक्ट, मतलब बट हाउ डज इट मैटर? तो बोला नहीं यार, मैं ऐसे ही सोच रहा था. तो मेरे माइंड में वंस यू आर सीइंग द लाइफ, थिंक अबाउट लाइक अ 20 years होराइजन, राइट? मतलब मैं तो बोलता हूँ कि सी लाइक इफ विल सी द बिगेस्ट पावर हाउसेस, ऑल द गाइज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प टू
honorable minister to Mr. Putin to Yeah. everyone is like into late 70s, Right. ठीक है, और early 80s. तो आपकी लाइफ 80 साल हम तक है. 40 के ऐसा मोटिवेट करते हैं, मैं भी लगता अभी तो शुरू हुआ है. है ना. तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी राइट. शुरू हुआ है. तो स्टिल लगता है कि यार हम जर्नी में ना इतना माइलस्टोन है ना करने के लिए, इतना मैसिव चीज है कि राइट इंटेंट से करो, राइट वैल्यू क्रिएट करो और कंसिस्टेंटली करो. मतलब होता है ना, बिग थिंग इज कमिंग विद द कंसिस्टेंसी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल. थैंक यू सर. आपकी मतलब ये तो मुझे को होस्ट मिल गया है. सो दैट वाज गौतम जर्नी, you know, and if you have stayed so long, I'm sure you would have not even just enjoyed. There was so much of learning. You know, it's like a fast track of how to be a founder, how to start a company which is global, and how to be at it and enjoy that journey. You know, one thing which I really like about Gautam and his journey is that he is enjoying. He's at it every day. He's enjoying his travel. He's not cribbing. He is enjoying all the pain he's been taking to go on the ground, meeting truck drivers and hub managers and even government heads and state heads, right? So his journey is like, you know, one day he's with a blue collar, the other day he's with the head of the state, right? So, wow, what a journey.